particle, that is electron mainly, and we have seen that Sx, Sy, and Sz operator in a 2x2 matrix in a basis of eigenstate of common eigenstate of S square and Sz. So what is the common eigenstate? The common eigenstate is basically, you can write this is up, up, and you have up and down, and we can write it also pi plus in z cap direction, and this can be also written as pi minus in z cap direction. There can be n number of, you have this particular of notation, and these all, and this is also identified as half, half, as well as half minus half, and these all in a matrix representation is all about 1 0 and 0 1. So this is, they are the common eigenstate for S square and Sz. So they are basically common eigenstate for S square and Sz. Okay, and also you can write it in this form also, half and half. You can write in this form also, half minus half. So everything has same meaning. And what we have S square operator in a matrix form is equal to 3 by 4 h cut square, and we have identity matrix is there. So this is your identity matrix, and I have Sx operator which has h cut by 2 and 0 1 1 0. The eigenvalue of Sx is, you have h cut by 2 and minus h cut by 2, h cut by 2 and minus h cut by 2, and the corresponding eigenvalue or corresponding eigenstate we can write phi plus in x direction and phi minus in x direction. So we can use this type of notation because we have to always change the basis and we have to represent it in a very smart way. And this is nothing but in a matrix form, this is 1 by root 2 1 1, and this is 1 by root 2 1 minus 1. And similarly, you can also find the Sy matrix in a 2 cross 2 subspace, and this will be minus I and 0. We will discuss this matrix separately in a separate class where we will discuss basically polyspin matrix and its property. So this is your Sy, and again we have eigenvalue. The eigenvalue is h cut by 2 and minus h cut by 2, and here we have eigenvector phi plus, you can write in y direction, and phi minus in y direction, and we have eigenvector 1 by root 2 1 I and 1 by root 2 1 minus I, isn't it? Just you can check whether they are orthogonal or not. Orthogonal है या नहीं, जरा check करो तो. They are normalized, but check it whether they are orthogonal or not. है या नहीं? So you have yes 1 into, अगर आप इसका एक का आप अगर ब्रा लोगे, then minus I will be become I, and then you have 1 minus 1 is equal to 0. And similarly, we have a very famous Sz operator. So I will write Sz here because I always want to associate S square and Sz. So Sz is nothing, but it is equivalent to h cut by 2. We have 1 0 0 minus 1, and eigenvalue is again h cut by 2 and minus h cut by 2, and we have eigenstate as
phi plus z, and phi minus z. So this is the beautiful story. And why I have written all this thing? Because I just want to discuss one beautiful problem. But before that, what we can do, and if you want to write in a matrix form, then obviously this is 1, 0, and this is 0, 1. And what you can do, you can write your eigenstate of phi plus z or anything. Suppose phi plus x is there. So I'm just giving you one example. If we are writing, we can writing 1 by root 2, 1, 1 as 1 by root 2, 1, 0 plus 1 by root 2, 0, 1. Isn't it? So I can write this eigenstate of Sx, this phi x in plus direction, can be written as 1 by root 2 pi z in plus direction plus 1 by root 2 pi z in minus direction. लिख सकते हैं ना? दिखाई दे रहा है आपको? तो थोड़ा सा छुप गया है. ओके, everything is okay? Okay. Similarly, we can also write our phi x minus. And what is your phi x minus? This is 1 by root 2, 1 minus 1. And this can be written as 1 by root 2, 1, 0 minus 1 by root 2, 0, 1. So this is my phi x minus. So we can write all these things in a basis of phi x plus and phi x minus. And separately, we can also write that this vector or phi plus z vector or phi minus z vector in a basis of eigenstate of Sx or Sy. So we can use this thing. Okay, we can use this thing and we can apply the postulates, and we will see a very interesting result we can get. And how this experiment is going to perform, that is very important. ये experiment कैसे किया गया, इसमें अलग से क्या बातें थी, वो हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा. So let's try to go for one basic experiment, but before that, we can also use one expression. So I think यहाँ तक clear है ना, everyone? It's okay? Yes, sir. Okay. So similarly, I can write 1, 0 in a basis of 1 by root 2, and this will be 1 by root 2, 1, 1, and this is your kit, isn't it? So you can take it in a bracket form, plus 1 by root 2, 1 by root 2, 1 minus 1. इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? half 1, 1 and half 1 minus 1, ऐसा लिख दूं क्या? Yes, sir. लिख दूं? ऐसे लिख दूं? half 1, 1 plus half 1 minus 1, ऐसे लिख दूं क्या? मैथमेटिक्स तो कहता है ऐसे लिख दो. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिक्स कहता है ऐसे लिख दो. क्या फिजिक्स Yes, भी sir. कहता है ऐसे लिख दो? Is that 1, 1 is normalized? No, sir. No. So physics क्या कहता है? Physics is always trying to see you, right? That write 1, 0 in a basis of orthonormal eigenstate of phi z or eigenstate of phi z. Sorry, eigenstate of Sz. So this 1 by root 2 have to be associated with this one. Are you getting my point? Yes, sir. Yes.
जैसे हम लोगों को याद होगा, पार्टिकल इन बॉक्स आपने किया था, वहां पर √2/a को साइन पाई x/a के साथ एसोसिएट करते हो, देन यू आर सेइंग इट phi1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You cannot Yes, sir. separate this √2/a because this is your normalization constant. Only this factor will make it normalized. Then you can use it as a unit vector. So it is very confusing that some people will just multiply this 1/√2 to 1/√2. This one, no, that is wrong. So you have to write this thing. So what you can write? You can write phi z plus can be written as 1/√2 phi plus x and 1/√2 phi minus x. Are you getting my point? And Yes, sir. similarly, you can write phi z minus as 1/√2, and this is your famous 1, 0, and this is famous 0, 1, and that value is equal to phi plus x minus 1/√2 phi minus x. Are you people happy? So always take care of normalization. कौन सा normalization और कौन सा coefficient है? You have to always take care of this thing. When we are writing this thing, that sum psi is equal to C1 or Cn phi n summation over n, then you have to identify what is your phi n and what is your Cn. Here your Cn is not half. Here your Cn is 1/√2. Then only you can use the completeness relation. Otherwise, completeness relation cannot be found. Unless and then only your Cn can be written as phi n psi. Are you getting my point? So this number is very important. So you have to always take care of this particular number. So always take care of this thing, है ना? So this is your basic thing. Now let's try to go for one beautiful problem. उसे हम जरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? Let's try to go for this. I think I have posted that question also, कि आप completely उस question को पढ़ सको, है ना? So anybody can dictate me. What is the first question? क्या है question क्या है? Anybody can dictate me such that I can explain it. बताओ क्या है? किशोर, can you read it? That question पढ़ सकते हो क्या? Yes, sir. क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? जस्ट टेल मी. सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने मोबाइल में भी जूम चला रखा है. अच्छा, ओके ओके, लीव इट, आई विल जस्ट रीड इट. आई थिंक सारे लोगों के पास मोबाइल में जूम ही चल रहा होगा, है ना? ओके सर, ओके. ओके, आई विल रीड इट. ओके, बट आई नीड ग्लास, ओके, बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, इजंट इट? सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ, तुम बोलो. वेरी गुड, बोलो. ओके सर. हम्म. A beam of a spin minus half particles moving along the y-axis. वेरी गुड. सो Goes- बीम ऑफ, सो एक एक करके बात करते हैं. सो Okay. देयर इज अ बीम ऑफ स्पिन, है ना? एक बीम ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल की है, वो किस moving डायरेक्शन में जा रही है? y वाई axis डायरेक्शन. वेरी गुड, गुड. through- आगे बताओ लक्ष्मी. हाँ, through two collinear SG apparatus. वेरी गुड. सो देयर आर टू कोलिनियर एसजी ऑपरेटर, सो दे आर इन सेम लाइन. ओके, गुड. एंड देन both with lower beam locked. okay, so there, so if it is going there, so you have plus sign there and minus sign is there, so and lower beam is going to block, and it is just going there, and again you have plus sign there and minus sign there, and lower beam is going, sorry, lower beam is going to block, isn't it? Yes, sir. The Okay. first has its B field. So first has is magnetic field in B field. Along the z axis. yes, sir. Very good. Along the Along the z z axis, and And second have magnetic field field in along x-axis. along x-axis. Very good, very good. तो ये अभी तक यहीं रहने देते हैं. हाँ. Okay, sir. So this is the question, and what will be the, क्या पूछ रहा है इसमें, जरा ये बताओ. What
what fraction of particle leaving the first will exist to the second? Okay. So Sir, question is very in bracket में और एक चीज है सर, B filled along the x-axis की जगह पे है ना, in bracket that is obtained by rotating the first. ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस कि ये आप तब रोटेट कर सकते हो जब पूरे के पूरे चीज को π/2 से रोटेट कर दो, है ना? Z से x को π/2 से रोटेट करेंगे, देन वी कैन गेट इट. सो दैट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू हैव, बट एक्चुअली दिस इज द थिंग. So in a first beam, what you have? Suppose there is any state is coming. So कोई भी state आ रहा होगा, and this is for the spin half particle. So this state can have some C1 phi1 plus some C2 phi2. कोई भी state psi होगा. Let's say this is any state psi, isn't it? है ना? And when it is coming here, so magnetic field in which direction? So magnetic field in Z direction. So what will be your eigen? So what will be output? Your output will be 1 0 and 0 1. Yes, isn't it? So your output is 1 Yes, 0 sir. and 0 1, है ना? With whatever with the probability, nothing. यहाँ पर उसे कुछ करना नहीं है, उसके बारे में बाद में करेंगे. If I am talking about normalized kit, we are getting 1 0 and 0 1. Now again it is the lower half, the lower part is going to be just stopped. इसको cross नहीं करने दे रहा है. Only this plus is going to be cross into that particular direction. And now your magnetic field in which direction? X direction. So if you have magnetic field in X direction, then what will be your output? Positive output क्या है? Sir, 1 by root 2 1 1. Obviously. So you have positive output is 1 by root 2 1 1, because this is your state associated to plus 1 or plus half or plus h cut by 2, isn't it? So this is your Yes, sir. state. Okay. So now what we have to do? We have to calculate what will be probability. If I am talking about fraction, that means we have to calculate what will be probability such that this state can be found in this state, isn't it? ये स्टेट sir. इसके अंदर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही तो देखा जा रहा है ना? सो व्हेन यू विल गो फॉर दिस वन, this can be written as 1 by root 2 1 0 plus 1 by root 2 0 1. Yes. So what will be fraction? कौन सा फ्रैक्शन है जो कि यहां पर 1 0 वाला पार्ट मिल रहा है? कितना फ्रैक्शन है यहां पर? So 1 by 2. 1 by 2. You have this state, but this state is mix of this and this, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. ये स्टेट इन दोनों से मिक्स्ड है. इसको तो आपने रोक लिया है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है. इस स्टेट में इसकी कितनी फ्रैक्शन है वही तो हमें देखना है, isn't it? Yes, sir. So that is what. So what will be answer? So answer is 1 by 2. Yes. So 50% जो है इस स्टेट में ये वाला भी पार्टिकल है. कहने का मतलब क्या है कि आप बीम दे रहे हो, यू आर जस्ट सेंडिंग लॉट ऑफ बीम. ओके, मिलियंस ऑफ बीम आर गिविंग. सपोज यू आर गिविंग दैट 100 बीम, एक नंबर ले लेते हैं. सो 100 बीम इज जस्ट क्रॉसिंग and it will just bifurcate into 1 0 and 0 1, and after then when you are changing the direction, you will get some fraction, and that fraction will be 50% of 1 0 and 50% of 0 1, isn't Sir? it? Huh. So, in the first chamber, we have blocked that 0 1 है ना state that is given in the question, like. तो फिर how we are getting that state, that spin in the second, मतलब ये चीज नहीं आ रही समझ. क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाली में ब्लॉक्ड है ना वो.
हाँ मतलब ब्लॉक्ड है, बिल्कुल ब्लॉक्ड है, डाउन बिल्कुल स्टेट जो बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आपका जो x का प्लस स्टेट तो यही है ना, यस सर, और वो ये तो प्लस है। स्टेट, ये जो प्लस स्टेट है, ये प्लस स्टेट किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो दैट इज मतलब वो 10 और 01 से, ये जीरो समझ वन, आ गया सर। ये तो लिख रहे हैं। तो इस हाँ जी स्टेट सर। में इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। तो 1/2। हाँ जी सर। बस यही तो आंसर है। सर हम्म मतलब फर्स्ट चैम्बर में अगर हमने 01 ब्लॉक किया है तो एंड सेकंड के बाद हमें कैसा उसका कंट्रीब्यूशन मिल रहा ये है? क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या? जो है वही तो है भाई। भाई आपको ये मिल रहा है ना, ये स्टेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। ये तो दिया हुआ है ना कि आपको प्लस स्टेट मिल रहा है। यस। जब प्लस स्टेट मिल रहा है तो इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं? मैं तो ये लिखा हूं, एक्चुअली तो यही है ना। हाँ। सो इस स्टेट में इसकी प्रोजेक्शन ले लो, क्या मिलेगा? 50% मिल रहा है। लिव इट दिस थिंग, आप इससे कंफ्यूज कर रहे हो। जस्ट लुक एट हियर, इस स्टेट में इसका प्रोजेक्शन क्या है? 50%। 50% है ना। हाँ। तो फॉर बाकी 50% फिर क्या है? बताओ बाकी 50% क्या है? जस्ट गिव जीरो मी। होगा ना सर, 01 होगा ना बाकी 50%। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, तो आप उसको बोल रहे हो वो कैसे आ गया? आप क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे हो, जो मिल रहा है आपको वही देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है। इफ आई हैव दिस स्टेट, देन दिस स्टेट मीन्स दिस इज अ मिक्स ऑफ 5 प्लस एंड 5 माइनस। ये तो है ही। अगर 100% आना होता, एक्चुअली क्लासिकली तो यहां कुछ नहीं मिलना चाहिए था, इजंट इट? यस सर, कल क्लासिकली क्लासिकली तो तो कुछ 0 नहीं मिलना चाहिए था आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मैथमेटिक्स अप्लाई करके देखो ना क्या मिल रहा है। आप ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पूछ सकते, ये कैसे आ रहा है वहां पर। इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, nobody will give you answer. How you can give the answer? By using the mathematics. तो यहां पर जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी में इसके, इस इंटेंसिटी का ये कितना परसेंट होगा, वो क्या कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन से ही तो निकालोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the third filter that तो transmits अब फिर से ये तो है ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो है ही और ये भी है। सो देन यू विल रीड इट, है ना। सो एंड देन दिस इज इन वाई डायरेक्शन, एंड देन bx है, एंड देन यू हैव प्लस और माइनस। इसको आप क्या कर रहे हो? ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? if a third filter that transmit only spin up along Hmm. z axis A spin up along z direction. Very good. is Spin introduced, up along z direction, and z what, डायरेक्शन और किसको आने दे रहा है? ओनली अप को आने दे रहा है। yes, what fraction of particles leaving the first will exist the third? इस फर्स्ट का कितना यहां पर एग्जिस्ट करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. कितने नंबर यहां पर मिले, उसका कितना यहां मिल रहा है। ओके, सो नाउ ये स्टेट हमारा क्या हो गया? 1 1, एंड व्हाट इज दिस स्टेट? 1 0 अगेन, yes sir, 10. 1 0. Now this state can be written as 1 0 as 1 by root 2
1/√2 और यू कैन राइट इट फाइव जेड प्लस कर देते हैं, इसे लिख लें इसे, और इसे फाइव एक्स प्लस कर देते हैं. यस. नाउ व्हाट विल हैपन? pi z plus can be written as 1/√2 pi x plus 1/√2 pi x minus. Am I correct? सही लिखा हूं? Yes, sir. Yes. So इस वाले स्टेट का इसमें होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? दिस स्टेट का इसमें होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/2. 1/2. So probability, so that is 1/2. इस स्टेट का इसमें 1/2 होने की प्रोबेबिलिटी है. इस स्टेट का इसमें कितनी होने की प्रोबेबिलिटी है? 1/2. 1/2. सो इस स्टेट का इसमें होने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4. 1/4. Isn't it? So probability that pi x plus in next की बात कर रहा हूं, in next pi z plus is half. इसकी इसमें होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. सो pi z plus in third, sorry, phi z plus, so how many particle of phi z इस वाले की इसमें कितने होने की प्रोबेबिलिटी है? So 1/4. 1/4. So the probability, so this will be half. So यहां पर आपको 50%, इसका पार्ट 50% यहां मिल रहा है और इसका 50% यहां मिल रहा है. Then you have the probability is what? 1/4. 25%. 25%. So यहां अगर आपकी इंटेंसिटी I0 है तो इसकी इंटेंसिटी यहां कितनी है? I0/2. I0/2. अगर यहां पर इंटेंसिटी I0 है प्लस वाले की, तो प्लस वाले की इसमें इंटेंसिटी कितनी है? I0/2. I0/2. प्लस वाले की इसमें इंटेंसिटी कितनी है? I0/4, sir. I0/4. अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर प्लस से तो प्लस ही आ गया यहां पर, फिर कैसे हो गया? आपको तो 100% मिल जाना चाहिए था ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसको समझने की कोशिश करो. कुछ ऐसे, मेरे पास 100 कॉइन है. जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था, और कंचन आप लोग के लिए, मेरे पास 100 कॉइन है. मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं. हेड वाले को लेफ्ट रख रहा हूं, राइट वाले को आप लेफ्ट रख रहे हो, राइट रख, टेल वाले को राइट रख रहा हूं. सो राइट में कितने नंबर ऑफ कॉइन होंगे? बताओ. मैं टॉस कर रहा हूं और मैं राइट साइड में हेड वाले को रख रहा हूं, लेफ्ट साइड में टेल वाले को रख रहा हूं. कितने कॉइन होंगे? अरे 50 कॉइन होंगे. आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या है? I am doing the toss. Yes. I am getting head. I am getting right. I am getting tail. मैं उसे लेफ्ट में रख रहा हूं. Getting head, right. Getting tail, left. So obviously there is not any biasness. So 50 coin will be on right side and 50 coin will be on left side. अब मैं फिर से उस कॉइन को टॉस करूंगा तो ये गारंटी है कि उसमें आपको हेड ही मिलेगा? No. No. So that is exactly happening here. If you have a state which is up state at this particular moment, you cannot give guarantee that in the next moment it has always up state. This is not a classical mechanics. Are you getting my point? This is exactly quantum mechanical thing. This is the random variable. अभी हो सकता है कि उसका up state हो. The same particle after some time can have down state.
Now I can give you answer that we have 1 0 state and how we are getting that 1 0 and 0 1 state 2 here. समझ में आ रहा है मैं जो बात कह रहा हूं? Yes, sir. So this is very important. We are doing quantum mechanics here. ये गारंटी नहीं है कि ये अभी 1 0 स्टेट है तो हमेशा ही 1 0 स्टेट पर रहेगा. आफ्टर सम टाइम इट कैन फ्लिप डाउन, फ्लिप अप, फ्लिप डाउन, फ्लिप अप, फ्लिप डाउन. आपको देख रहा है, आपने मोमेंट्री कहा है कि देयर इज 1 0. दिस इज वन पर्टिकुलर मोमेंट, द सेम स्पिन. सो आप कुछ इस तरह से कहोगे, वन इलेक्ट्रॉन आइदर हैव अप स्पिन और हैव डाउन स्पिन. सो यू कैन नॉट से इट विल बी ऑलवेज अप स्पिन. इट में अप, इट में डाउन. तो यहां जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन जमा किए हैं उसे अगर फिर से जाओगे तो उसमें अप वाला भी हो सकता है, डाउन वाला भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एंड दैट गर्ल हु आस्क्ड द क्वेश्चन फर्स्ट, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, मुझे क्लियर है. कंचन के अलावा एक और लड़की ने क्वेश्चन पूछा था ना? यस सर, समझ सर. क्या नाम है आपका? परमप्रीत. हाँ, समझ में आ रहा है यस सर. क्या हो रहा है यहाँ पर? यस सर. कॉमन सेंस फिजिक्स नहीं हो रही है ये. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. दिस इज इंटायरली डिफरेंट थिंग. और कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. सिर्फ 2 लोगों को पता है ये चीज. किसे किसे? God That और God उस and particle. particle. गॉड एंड पार्टिकल. जैसे जैसे हमें घुमा रहे हैं हम वैसे वैसे घूम रहे हैं. बट मैथमेटिक्स हमारी इतनी सॉलिड है, हेंस वी आर ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस. वी हैव लॉजिक, एंड व्हेंस यू हैव लॉजिक you can use your probabilistic mind and then only you can give the answer. Are you people happy? Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. चलो लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी. चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है. अब जो कहानी है वो बड़ी मजेदार है. Sir, question बोलो. क्वेश्चन बोलो. If the middle filter transmit both spin up and down वेरी गुड. along एक मिनट मुझे फिगर बना लेने दो. Yes, sir. सो मिडिल फिंगर, सॉरी मिडिल जो है वो क्या है, वो दोनों को अप एंड डाउन को ओपन कर दे रहा है ना? Yes, sir. No blocking. नो ब्लॉकिंग. सो ये आपका 1 0 है और ये भी आ गया आपका 1/√2 1 1 है. और यहां पर क्या आ गया? 1/√2 1 -1 है. ठीक है? यस या नो? अब इन दोनों को आप किस में ले जा रहे हो? थर्ड वाले में ले जा रहे हो. और थर्ड वाला क्या कह रहा है? BZ. किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में ही है ना? X-axis. हाँ? If middle filters transmit both spin up and down, वेरी गुड. सो अप The और डाउन X- दोनों जा रहा है. फिर the x-axis. हाँ हाँ, एंड लास्ट But- वाला तो जेड में ही है. Yes, sir. यहाँ पे And- लिखा था x-axis, but the Uh-huh. last one transmit only spin down the z-axis. लास्ट वन कैन ओनली टेक दिस वन 1 0. लास्ट वन, सॉरी 0 1. लास्ट वन किसे ले जा रहा है? 0 1. आर गेटिंग माई पॉइंट? सो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इसमें कितना फ्रैक्शन होगा, है ना? Yes, sir. What fraction of particles leaving the first will leave the last? So what will we answer? So this can be written as 1/√2 1 1 minus 1/√2 1 -1. Isn't it? यही है ना? Yes, sir. एंड दिस इज व्हाट? और ये कैसे लिख सकते हो? दिस इज
1 by root 2 1 1 plus 1 by root 2 1 minus 1 मिक्स स्टेट मिल रहा है आपको तभी तो, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So this one is 1 by root 2 1 1 and 1 by root 2 1 minus 1. तो ये जो आपको यहां जो मिल रहा है वो तो यही मिल रहा है, दिस वन. यस या नो? Yes, sir. यहां जो भी स्टेट मिल रहा है दैट स्टेट इज 1 0 एंड दैट विल बी 1 by root 2 1 1 plus 1 by root 2 1 minus 1. Are you getting my point? Yes, sir. And this state ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है इसमें, पॉसिबिलिटी है क्या? आपको जो ये दोनों मिल रहा है ये तो यही मिल रहा है ना, यहां पर तो ये स्टेट है और कोई Yes, आपसे sir. बोल रहा है कि आपको ये मिल रहा है. इज दैट पॉसिबल? So I think not possible. नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस स्टेट एंड दिस स्टेट, यहां पर जो स्टेट मिल रहा है ये स्टेट और ये स्टेट आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल. Orthogonal है, sir. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. So these are the orthogonal state. यहां जो आपको मिला है और यहां जो मिला है, this is just a orthogonal state. So अगर ये आपको जो orthogonal state यहां मिल रहा है, then obviously there is zero probability. What will be probability? That will be zero. So it is not possible. अगर कोई आपसे कह रहा है कि ऐसा मुझे मिल रहा है, then it is not possible. Are you getting my point? Because this one and this one is here. ये यहां मिल रहा है आपको. This one and this one is orthogonal state. So yes, orthogonal state कभी भी possible नहीं हो सकती है. So this is one of the very nice problem and ये problem R Shankar की है. I think chapter number 14 and question is, let me give you 14.5.3. okay. Okay, so this is unsolved problem, but fortunately answer is given. So the first one is half, second one is 1 by 4 and third one is 0. Wonderful problem. और इस problem से आप पूरी तरह से सारी चीजों को समझ सकते हो with the help of your quantum mechanical treatment. Clear है? Yes, sir. सर ओके हाँ, क्या हो गया बताइए. मतलब सर मुझे पता नहीं ये सही क्वेश्चन है क्या गलत है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. क्या कंफ्यूजन हो रहा है? इसके पहले हमने जो लिखा था स्टेट, उसमें हमने ये बोला था कि हमें जो रीडिंग मतलब मिल रहा है वो स्टेट ऐसा है, वो क्या आया क्यों आया ये हमें पता नहीं है. नहीं है पता. हाँ, तो अभी भी हमें एक ऑर्थोगोनल स्टेट तो अरे वहां ऑर्थोगोनल इसका इस पर प्रोजेक्शन लोगे तो क्या होगा? 0 होगा ना. हाँ भाई इसका इस पर प्रोजेक्शन लो, आपको हाफ मिलेगा. प्रोजेक्शन स्क्वायर करो, है कि नहीं? हम्म, इसका इस पर प्रोजेक्शन लो, हाफ मिलेगा. नहीं, अब इसका इस पर प्रोजेक्शन लो, दैट इज 0. यस तो 0 होगा तो मैं क्या करूं इसमें? मैं तो कैलकुलेशन से ही दे सकता हूं आंसर ना. हाँ. सो दैट इज द आंसर. भाई कह रहे हो कि आपने ये भेजा यहां पर, जब यहां पर इसी का तो पार्ट है ना ये 1 by root 2 1 1 and 1 by root 2 1 minus 1. This is your incoming and this can be break into two part, this and this. और ये आने के जब दोनों आ रहा है तो इसको तो इसी तरह लिख सकते हो ना. और आपको आउटकम मिल रहा है 0 1. व्हाट इज 0 1? 0 1 is this one. So is that this state and this, if you will take the dot product of this state and this state, that will be 0.
or if you will just going to take the scalar product, that will be 0. Okay, इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. ये स्टेट यहां अंदर आने के बाद दिस इज जस्ट प्लस भी मिल रहा है, माइनस भी मिल रहा है. दैट मीन्स दिस स्टेट इज कैन बी रिटन लाइक दिस इन अ नॉर्मलाइज वे. ठीक है ना? ओके तो सर. इसको ऐसे नहीं, इसको और आप ले लो, एक और √2 ले लो, है ना? सो 1/√2 ऐसे ले लेंगे. ठीक है? ये आपको मिल रहा है. एग्रीड? ये तो कह रहा है ना कि दोनों मिल रहे हैं, तो इससे दोनों कैसे बनेंगे? यही तो बनेंगे. नॉर्मलाइज स्टेट की मैं बात कर रहा हूं. हाँ सर. भाई यहां पर जो देखो, यहां क्या था? 1 0 से ये मिला है सिर्फ आपको. सो इसको आपने इनके बेसिस में लिख लिया. यस. यस. यहां पर 1 0 से दोनों मिल रहे हैं, तो 1 0 का मतलब यही है ना. और हाँ सर. आउटकम आपका क्या मिल रहा है? आउटकम 0 1 मिल रहा है. तो 0 1 होने का मतलब क्या है? यही तो होगा. दैट इज 1/√2 इज ऑल्सो देयर. ये बार बार गलती होता है. 1/√2 इज ऑल्सो देयर. एंड दिस स्टेट इज व्हाट? ऑर्थोगोनल. क्लियर है ये? क्लियर क्लियर. ओके. सो दिस इज द स्टोरी, है ना? ये दोनों मिलने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ओके. चलो. So this is the actually spin, and this experiment is actually backbone of quantum mechanics. जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, everybody was so puzzled कि ये कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, and then you have developed your postulates and all this thing, and that postulates works on this particular experiment, and then you can give the answer. Okay. Yes, sir. चलो. So I think this is you have to just do practice. इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना? एंड इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो ओके. सो दिस इज complete theory of spin. In the next class we will go for polyspin matrices and all this thing, and after then we will solve different types of problem. ठीक है? आज के लिए इतना ही. So this one problem is not a one problem. It will just give you all the concept of eigenvalue, eigenstate, writing one state in a basis of eigenstate. Okay? So you can use this thing. Okay? Chalo. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, sir. Hmm.